Hello, Bacho. Let's read this question. The question says, so that the vectors A vector, B vector, C vector are coplanar when A vector equal to I plus 3j plus k, B vector 2i minus j minus k, and C vector 7j plus of 3k. So we have to solve this problem. Before that, we have to discuss some key concept. If the three vectors are there, A vector, B vector and of C vector, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो कोप्लानर होने का मतलब क्या होता है कि कोप्लानर है मीन्स कि A वेक्टर डॉट ऑफ B वेक्टर क्रॉस ऑफ C वेक्टर is equal to 0, or we can say that box of A, B, C vector is equal to 0. So box is written also in the determinate form. So now we have to show that the vectors are coplanar or not. So we have to find out that box of A, B vector and C vector. Then box is written as determinant of coefficient of I 1, 3 and 1. B vector का coefficient है मेरा 2, -1, -1. C vector का I का coefficient 0 तो 0, 7 and 3. अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे तो 1 फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो 1 तो ये आ जाएगा -3 प्लस ऑफ 7. नेक्स्ट -3 देन 6 माइनस ऑफ 0. नेक्स्ट +1 उसके रेस्पेक्ट में आएगा 14 माइनस ऑफ 0. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. ये वैल्यू आ जाएगा मेरा दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 and this one is -18 plus of 14. So 18 minus of 18. So this value equal to 0. अगर box of ABC का value 0 है, that means the vector A, B and C are coplanar vector. If box of ABC 0 होता है, then the vector is called coplanar vector. So hope you understood it well. Best of luck.